स्वागतम, शुभ स्वागतम। पोष की सर्द सुबह में मैं प्रीति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ और खैर मकदम करती हूँ। ये सत्य है कि माँ हमेशा हमारे साथ रहती है, हमसे कभी दूर नहीं हो सकती। आज संघमाता डॉक्टर मुक्ति भटनागर के 65वें जन्म दिवस के मौके पर हम सब उन्हें याद कर रहे हैं। भले ही वे भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी दिव्य उपस्थिति का आज भी आभास होता है। आभास ममता का, उनकी शक्ति का, उनके सामर्थ्य का और उनके आशीष का। हम सबके लिए वो केवल एक शख्सियत नहीं बल्कि प्रयागराज की त्रिवेणी स्वरूपा थी। आज उनके 65वें जन्म दिवस पर संघमाता डॉक्टर मुक्ति ग्लोबल बुद्धिस्ट फाउंडेशन एवं सुभारती समूह के संयुक्त तत्वाधान में संघमाता डॉक्टर मुक्ति भटनागर के जन्म दिवस पर मंथन एवं सर्वधर्म सभा का विशेष आयोजन किया जा रहा है। आज के इस दिन को और अधिक विस्मरणीय बनाने के लिए कई महानुभाव हमारे साथ उपस्थित हैं। हम सभी गुणीजनों, गुरुजनों का स्वागत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मैं हमारे फाउंडर सर डॉक्टर अतुल कृष्ण बोध सर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो संघमाता डॉक्टर मुक्ति भटनागर के चित्र पर माल्यार्पण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर फंक्शन। जैसे कि हमारा रिच कल्चर है कि किसी भी कार्य के आरंभ को शुभारंभ करने के लिए हम दीप प्रज्वलन करते हैं, तो आइए आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं और संघमाता डॉक्टर मुक्ति भटनागर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हैं। मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर एमवी आगा महापंडित एबी ज्ञानेश्वर जी को, जो कि आज मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी एमवी डॉक्टर धमपिया जी को, जो कि विशिष्ट अतिथि के तौर पर आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं। मोस्ट वेनरेबल मुफ्ती शाह आलम वजीरी जी, साथ ही मोस्ट वेनरेबल ब्रह्मचारी श्री प्रमोद शास्त्री पंडित जी, मोस्ट वेनरेबल ज्ञानी किशन पाल सिंह जी, मोस्ट वेनरेबल पंडित शंकलानंद जी एंड रिवर्ड फादर जॉय हॉवर्ड। सर प्लीज आप सभी से अनुरोध है कि मुक्ति भटनागर माता जी के सामने दीप प्रज्वलित करें। भी आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं अनुरोध करती हूँ कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बस का टाइम कब है? शुरू में करनी कि लास्ट में करनी है? सर यहाँ पे
बैठ गए। जोरदार तालियों के साथ आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी कार्यक्रमों में अपने अतिथियों को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करते हैं प्रकृति बचाओ संकल्प के तहत। मैं सुभारती परिवार के सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि वो आज के हमारे अतिथियों को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। हमारे फाउंडर सर मोस्ट वेनरेबल गेस्ट अग महापंडित ए बी ज्ञानेश्वर जी को पौधा भेंट करते हुए, हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहित सर मोस्ट वेनरेबल गेस्ट डॉक्टर धम पिया जी को पौधा भेंट करते हुए, हमारे साथ हैं डॉक्टर हिरोहितो सर मोस्ट वेनरेबल गेस्ट ब्रह्मचारी श्री प्रमोद शास्त्री पंडित जी को पौधा भेंट करते हुए, डॉक्टर आकांक्षा मोस्ट वेनरेबल गेस्ट ज्ञानी किशन पाल सिंह जी को पौधा भेंट करते हुए, कृष्ण मूर्ति सर सुभारती समूह के सदस्यों से अनुरोध है कि वो आज के हमारे अतिथियों को पौधा भेंट कर स्वागत करें। डॉक्टर शल्यराज मैम दम मदर मजबूरी जी को पौधा भेंट करते हुए, मैं अवनी कमल जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो रेवरेंड फादर जॉय हॉवर्ड को पौधा भेंट करें। वीसी सर ज्ञानी जी को पौधा भेंट करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। आज के हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं मोस्ट वेनरेबल अग महापंडित ए बी ज्ञानेश्वर जी। आप महानिर्वाण मंदिर कुशीनगर के मुख्य भिक्षु हैं तथा कुशीनगर भिक्षु संघ के अध्यक्ष पद से सुशोभित हैं। साथ ही आपको म्यांमार की सरकार द्वारा हाल ही में अभिध्वज महारथा गुरु के सम्मान, जो कि भारत के द्वारा दिए जाने वाले भारत रत्न के समकक्ष है, से विभूषित किया गया है। आप पहले भारतीय हैं जिनको म्यांमार की सरकार द्वारा ये सम्मान दिया गया है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट महासंघ के महासचिव, आप धम्म दीपा फाउंडेशन के संस्थापक, नॉर्थ ईस्ट इंडिया बुद्धिस्ट संघ काउंसिल के महासचिव हैं एवं बहुजन हिताय शैक्षणिक ट्रस्ट मनु बंकु त्रिपुरा के संस्थापक हैं। इन महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होने के अतिरिक्त आप एमएमडी कॉलेज त्रिपुरा के सह आचार्य एवं प्राचार्य हैं। आपके द्वारा धम्मदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से एक चरितार्थ विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आप एक मोनिस्टिक शिक्षण संस्थान धम्मदीप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट एकेडमी के नाम से संचालन कर रहे हैं, जिसमें 150 से अधिक भिक्षु एवं
श्रामणेरों को धम्म शिक्षा एवं ध्यान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं, व्याख्यानों, सिंपोजियम इत्यादि में सक्रिय रूप से सम्मिलित रहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ अतिथि के तौर पर मौजूद हैं मुफ्ती शाह आलम मज़ाहिरी जी। आप जनपद बागपत के नायाब शहर काजी हैं एवं जमीयत उलेमा हिंद के नायाब सदर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर मौजूद हैं ज्ञानी किशन पाल सिंह जी। आप परनगर गुरुद्वारा, जो कि मेरठ शहर का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, के मुख्य ग्रंथी हैं। सर, आपका तहे दिल से स्वागत है। साथ ही हमारे साथ हैं ऑल इंडिया ईसाई महासभा के नेशनल प्रीस्ट रेव जॉय एम हॉवर्ड। आप केयर फॉर यू विमेंस ओल्ड एज होम का संचालन करते हैं। आप सर्वेंट ऑफ गॉड्स मिनिस्ट्री एसोसिएशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिष्ठाचार्य पंडित प्रमोद जैन शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हस्तिनापुर जैन मंदिर में प्रवास करते हैं एवं आप जैन विधि से समस्त धार्मिक अनुष्ठान प्रमाणित ग्रंथों के आधार पर करते हैं एवं प्रवचन देते हैं। साथ ही स्वागत करना चाहूंगी पंडित शंकलानंद जी का। आप सुभारती पंचायती मंदिर के मुख्य एवं प्रख्यात पंडित हैं। आप सनातनी एवं आर्य समाजी दोनों विधियों से धर्मानुष्ठान करवाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। विशेष अतिथि के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना कारी जफर इस्लाम। आप घंटाघर मस्जिद के इमाम हैं एवं दावत अल कुरान मिशन मेरठ के अध्यक्ष हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद है मोस्ट वेनरेबल डॉक्टर नंद रतन थेरो। ही इज द एमिनेंट बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम कुशीनगर। कंसीडरिंग हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, ही वाज नॉमिनेटेड एज चेयरमैन ऑफ अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश. Bhante ji is also actively associated with Pali Society and other important Buddhist organizations. Sir, we welcome you in this program. साथ ही हमारे साथ है धम्म मदर मिस मजूरी चेरोन. She is a professor of history at Ramkhamyang University, Bangkok, Thailand. Serious Dhamma practitioner of Essen Goenka and found Tavya traditions of Vipassana meditation. She is a student of Pali and supports teaching and learning of Pali in order to preserve and promote the original Buddha Vachana, the original teachings of Buddha. She is a great philosophian from Thailand. She is a dedicated social and religious worker. She is also Dhamma mother of our venerable Dhamma Piraji. सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर हरप्रीत मान जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगी हाजी आजाद सैफी जी का, जो कि बागपत से हैं और आप ऑल इंडिया उर्दू तंजीम के सेक्रेटरी हैं। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे फाउंडर डॉक्टर अतुल कृष्ण बोध सर हैं, शल्या मैम हैं, कृष्ण मूर्ति सर हैं और अवनी कंवल मैम हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे वीसी सर जी के थपलियाल सर और हमारे पूर्व वीसी सर आहूजा सर मौजूद हैं। साथ ही यहाँ उपस्थित मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप सभी ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है वो संघमाता डॉक्टर मुक्ति भटनागर को याद करने के लिए हम बना रहे हैं। विश्वविद्यालय परिसर में आज पूरे दिन चलने वाले कार्यक्रमों में बोधि उपवन का उद्घाटन किया जाएगा। बोधि उपवन में बौद्ध मठ, अशोक स्तंभ, धम्मचक्र, माने एवं दीपशाला का बौद्ध विद्वानों द्वारा विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज संघमाता डॉक्टर मुक्ति भटनागर के 65वें जन्म दिवस के मौके पर हम उनको याद कर रहे हैं, तो मैं आपको छोटे से कुछ चंद शब्दों के साथ उनके कृतित्व के साथ जोड़ना चाहूंगी आप सभी को। संघमाता डॉक्टर मुक्ति भटनागर का बहुआयामी व्यक्तित्व, उनकी बहुमुखी प्रतिभा एवं असीमित संकल्पशीलता की लौ से पुष्पित एवं पल्लवित था। श्रद्धेय डॉक्टर मुक्ति भटनागर औषधि की विख्यात प्राध्यापक तथा अत्यंत सम्माननीय एवं समर्थ शिक्षक थी। डॉक्टर मुक्ति का जन्म उत्तर प्रदेश की पवित्र नगरी इलाहाबाद में शिक्षाविदों, चिकित्सकों तथा सिविल सेवकों के संभ्रांत परिवार में
16 जनवरी 1957 को हुआ था। वो श्रीमती कमल नारायण एवं डॉक्टर जगत नारायण की 5वीं संतान थी। उन्होंने अपनी शिक्षा सेंट मैरी एकेडमी इलाहाबाद से प्राप्त की थी। वह बाल्यकाल से ही अत्यंत जिज्ञासु स्वभाव की थी तथा सदैव ही हर क्षेत्र में सर्वोत्तम मापदंडों का चयन करती थी। बेहतर को और बेहतर बनाने की उनकी सदिच्छा उन्हें निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर करती रही। डॉक्टर मुक्ति सादगीपूर्ण जीवन जीना पसंद करती थी तथा किसी भी प्रकार के दिखावे को खुद से दूर रखती थी और इस सब के हम सभी साक्षी भी हैं। डॉक्टर मुक्ति ने अपने स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा जनरल मेडिसिन MLN कॉलेज इलाहाबाद से प्राप्त की। डॉक्टर मुक्ति एवं विलक्षण छात्रा होने के साथ ही सांस्कृतिक आयोजनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। वो प्रखर वक्ता थी तथा निडरता के साथ अपनी विचारधारा को साझा करती थी। प्रेम एवं सौहार्दता की प्रतिमूर्ति डॉक्टर मुक्ति सभी के साथ संवाद स्थापित करना पसंद करती थी। उनकी सहृदयता एवं अपनेपन का भाव सभी को बरबस ही उनकी ओर खींच लेता था। वह मानवीय मूल्यों का अगाध स्रोत थी जो अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रोत्साहित कर सफलता के नए आयाम गढ़ने की ओर अग्रसित करती थी। वो अपने ज्ञान एवं संस्कार के बल पर अपने आसपास के वातावरण में उत्साह का संचार करती थी। वो अपने व्यवहार कुशलता के दम पर आपसी संबंधों का एक अद्भुत तारतम्य स्थापित करते हुए नित नए कीर्तिमान गढ़ना पसंद करती थी। डॉक्टर मुक्ति एक ममतामयी शिक्षक थी। उन्हें कई बार सुभारती मेडिकल कॉलेज में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। आपने 22 वर्ष के लंबे एवं आलोकित कार्यकाल में डॉक्टर मुक्ति न केवल जनरल मेडिसिन के विभाग को विकसित उन्होंने किया था, बल्कि साथ साथ सभी चिकित्सीय एवं शैक्षिक विभागों को भी वो दिशा निर्देशित करते हुए विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही थी। वो एक विवेकशील एवं प्रतिभावान अनुसंधान गाइड थी। डॉक्टर मुक्ति ने तथागत के प्रभाव के कारण बौद्ध धर्म स्वीकार किया तथा म्यांमार की महानायक कमेटी के सेक्रेटरी जनरल द्वारा संघमाता की उपाधि 2018 में उन्होंने प्राप्त की। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें डिलिट ऑनरिस कॉजा सम्मान भी प्रदान किया गया था। 7 जून 2021 को डॉक्टर मुक्ति ने परिनिर्वाण प्राप्त कर लिया। उनके जाने के उपरांत अनेकों यादें रह गईं जो हमें आज भी उनके साथ जोड़े हुए हैं। आने वाले समय में भी उनके द्वारा किए गए पुण्य कार्य हमें उनसे जोड़े रखेंगे तथा सदैव जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आज संघमाता डॉक्टर मुक्ति भटनागर भले ही भौतिक रूप में हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन उनकी शक्ति का एहसास हमें हमेशा होता रहता है, जैसे वो हमेशा हमारे सामने मुस्कुराकर कह रही हो कि परेशान ना होइए, मैं आपके साथ ही हूं। Now, I would like to call our founder, Dr. अतुल कृष्ण बोर्ड जी, for the program कि आगे का संचालन वो संभालें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रीति जी। मैं सम्मानित एवं पूजनीय मंच, पूजनीय संघ, हमारे मध्य आए हुए विभिन्न धर्मों के सम्मानित एवं पूजनीय गुरुजनों एवं इस सभागार में उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। As you know that today is the birth anniversary of my wife, Dr. Mukti. That is the 16th January, and we are just trying to remember her, to pay her tributes. लेकिन इस अवसर पर हमने ये विचार किया कि उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। तो वो हमेशा इस बात के लिए प्रयासरत रहती थी कि समाज में समन्वय हो, सब लोग एक साथ मिलकर प्यार मोहब्बत से रहें, समाज में जो विघटनकारी तत्व हैं उनको हटाया जाए और अच्छे लोग प्रेम से, प्रेम करुणा मैत्री के भाव से लेकर रहें। इसीलिए हम लोगों ने ये विचार किया कि आज हम लोग अपने इस सेशन को, जो पहला सेशन है आज के समय का, उसको हम 2 हिस्सों में विभक्त कर रहे हैं। एक, हम इस बात को कहना चाहते हैं कि सारे धर्म, जितने भी धर्म हैं, उनके जो मूल तत्व हैं वो सारे धर्मों में एक सही है और उनको विभिन्न धर्मों ने अपने अपने रूप से व्याख्यापित किया है। उसके तरीके से अलग अलग हो सकते हैं, बताने के तरीके हो सकते हैं।
तो ये जो पंचशील का सिद्धांत है, ये किसी बौद्ध धर्म का अगर हम कहें कि सिद्धांत है तो ऐसा नहीं है। ये एक सार्वभौमिक दर्शन है जिसको कि किसी भी धर्म के द्वारा नकारा नहीं जा सकता और नकारा गया है। तो एक हम छोटा सा व्याख्यान, हमारे बीच में एक बहुत ही ज्ञानी हमारे धम्पिया जी मौजूद हैं, वो हमारे बीच में इस बात को साबित करेंगे, बताएंगे कि जो पंचशील का सिद्धांत है ये किसी धर्म विशेष का नहीं है, ये सार्वभौमिक दर्शन है। वैसे तो इस विषय के ऊपर अगर मैं निवेदन करूंगा, वैसे हम लोगों का एक ये विचार भी है और बहुत जल्दी हम लोग एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं कि एक एक धर्म के बारे में एक एक धर्म गुरु को पूरा लगभग 2-3 घंटे का समय दिया जाए कि वो हमारे बच्चों को, हमारे स्टाफ को, हमारी जनता को ये बताएं कि किस प्रकार उनका जो धर्म है वो आपस में प्रेम से रहना सिखाता है, लड़ाई झगड़ा किसी विवाद को नहीं सिखाता है। पर आज समय अभाव के कारण हम थोड़ा सा सीमित अपने आप को करेंगे। एक तो वैसे भी थोड़ा सा हम लेट हो चुके हैं और फिर भी हम इस चीज को सीमित करेंगे, तो हम ये निवेदन करेंगे केवल हमारे बीच में जो हमारे धम्पिया जी हैं वो इस बारे में प्रकाश डालें। और भविष्य में एक श्रृंखला इस बात की शुरू की जाएगी कि कोविड का प्रकोप भी थोड़ा सा ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। हमारे डॉक्टरों के प्रयास हैं, हमारे नेताओं के प्रयास हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के प्रयास हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर के प्रयास हैं कि किस तरीके से उसको कंटेन किया जाए, रोका जाए। तो सबसे बहुत जल्दी इस पे हमें निजात मिलने की हम उम्मीद करते हैं। उसके बाद हम इस श्रृंखला को शुरू करेंगे। और फिर हम ये नहीं जानते, जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई मैं जो हूं अव्याकृत प्रश्नों के बारे में नहीं कुछ कहना चाहता। ये आत्मा है, आत्मा नहीं है, इस जीवन के बाद आगे क्या होता है क्या नहीं होता है कोई नहीं जानता। सब धर्मों में अपनी अपनी बात कही गई है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा है, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा है लेकिन नित्य है, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा है लेकिन अनित्य है। कोई पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, कोई स्वर्ग में विश्वास रखता है, कोई मोक्ष में विश्वास रखता है। हम कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, सच्चाई हमें भी नहीं पता। ये केवल एक रिसर्च का विषय है आज की तारीख में। लेकिन हम अपनी संघमाता डॉक्टर मुक्ति भटनागर के लिए जो सोच सकते हैं वो सोच सकते हैं कि सभी धर्मों के जो भी व्यवस्थाएं हैं, अपने किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका बहुत बड़ा योगदान समाज को रहा हो, उसके लिए, उसके जाने के बाद हम क्या उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्या प्रेयर कर सकते हैं कि यदि कोई आत्मा हो तो वो उसको शांति मिले, अगर कोई मोक्ष नाम की चीज हो तो उसको मोक्ष मिले, अगर कोई जन्नत या स्वर्ग हो तो उसको स्वर्ग मिले। तो ये सब सोचते हुए आज हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना का एक सेशन करेंगे जिसमें हमने निवेदन किया है और हम बहुत बहुत आभारी हैं अपने विभिन्न धर्मों के गुरुओं का कि वो यहाँ पर आए हैं और आकर उन्होंने इस बात को हमारी स्वीकार करते हुए डॉक्टर मुक्ति की याद में कुछ प्रार्थना करने का हम लोगों को मौका, सुनने का मौका दिया है। मैं आप सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हुए अपने इस कार्यक्रम के पहले सेशन को मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय वेनरेबल धम्पिया जी बनते जी से कि वो इस विषय पर आकर हम लोगों का मार्गदर्शन करें, ज्ञान दर्शन करें, हमारे को बताएं कि किस प्रकार जो फिलॉसफी ऑफ पंचशील, इट इज यूनिवर्सल फॉर पॉलिसीज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन। मोस्ट वेनरेबल धम्पिया जी। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि,
Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. A very good morning to everyone present here. At the outset, I take this opportunity to pay my deepest respect to Most Venerable Gyanesara Sayadaw from Kushinagar, and also on this special occasion, as we are celebrating the 65th birth anniversary of Dr. Mukti Bhatnagarji, the Sanghmata, as she has been given the title by the Supreme Sangha Council of Myanmar. And the gathering today is something where we find it's a unique one. The faith leaders from different faiths, different religion, we are here together in unison, in harmony. And it is to discuss what are the things that hold, that join, that unite, and which are the things that disjoin, that breaks off, that destroy. And here, the topic given to me to speak about is Panchasila. Some people might think this Panchasila is specifically for the Buddhist, but that is not the case. The Panchasila is a Dhamma, a Dharma, whatever you call it. Just if we look around, we have been presented by plants. Suppose we take a plant, small plant, say mango plant or sapling or jackfruit or pomegranate, and any simple small plant. There is a principle, a cosmic principle, a physical principle that holds this plant and nurture this plant and allows the plant to grow and fructify. This is the universal principle. A mango tree will give rise to become a big mango tree, not a jackfruit tree or a tree of tamarind or something else. This is a simple knowledge. The science knows it, common sense talks about. एक इमली का पेड़ जो है तो इमली ही देगा, इमली ही होगा, और एक जैकफ्रूट का पेड़ जो है जैकफ्रूट ही देगा, जैकफ्रूट ही उससे होगा. This is what the physical law of nature, this is what the universal law of nature called Dhamma or Dharma. अगर इसको कोई modify करता है, if somebody tries to modify it, that is also possible, but it has to work in a process, a system. And that system is cause and effect relationship. If these are the causes, and certain kind of effects will follow. There cannot be accidental कि हमने ये जैकफ्रूट का बीज पौधा लगाया और उसमें से मैंगो का पेड़ आ गया और इमली का फ्रूट दे रहा है, ऐसे कुछ होता है? Not possible. It is not the case that we have planted a jackfruit tree, a jackfruit seed, and a mango tree came off
and permanent fruit or seed is given. That is not the case. So this is the cause and effect relationship we have to understand. This is in the physical world. This is called actually the truth, the universal truth, universal laws, universal principles, cosmic principles, which are inbuilt in the universe, in the cosmos, in the world. The universal truth is called Dhamma or Dharma. Today, we all know that the world revolves around the sun on its own axis. This is also universal truth, the Dharma, Dhamma. This principle holds the world to revolve around. If tomorrow there is something that goes beyond, and the principle of the truth, universal truth breaks down, then what will happen? Then the world will stop revolving around. Then, as you know, what will happen as a result? So here, there are certain principles that hold and sustain the universal truth, the universal laws, the cosmic laws. Some of our people, we attribute those laws to be the creation of Almighty God, or Ishvara, Allah, Bhagavan, whatever name we give. It's perfectly fine. Who has created, that we may argue, but definitely there is a cosmic laws, universal laws in the physical world, which sustains, and this is universal, whether we argue or whether we believe or we don't believe, we accept or don't accept. There are certain sets of rules in the physical world that exist, that sustain the universe, that helps the world, the universe to move ahead. If there is a breakdown in these laws, then things will break down, accidental things will happen. That's what we have been observing, different kind of phenomena appearing because of certain kind of imbalance in these laws. So there is another law in the mental world. In the mental world, what we think, what we speak, what we wish, and how we act. This is actually in the mental world. This world or these laws are also universal laws. These universal laws are called the laws of karma. What I have spoken, the universal truth or the universal principles, they are the laws of physical laws of the physical world. But the mental world that we have, what we think, what we speak, what we do, that's the laws of karma, that is also very important, that affects. For example, if my mind is, or your mind is full of anger, hatred, animosity, ill will, hatred, aversion, and this is the universal law, universal truth, that I will produce nothing but unpleasant, miserable things for me and around me. Because these are the laws, the sensations, the forces, the power that will destroy, that will not attract or harmonize, that will destroy and break even the harmony. So if in our mental state, if I'm full of love, compassion, maitri, karuna, prem, then what will be the result? The result will be, I will feel and experience pleasant feeling, good feeling, happiness, tranquility, and feel good. And whoever comes with me will also feel good. I'll be doing service. This is the law of nature, universal truth at the mental world, at the mental level. The two physical, the two laws, one is of the physical world, the other is of the mental world. Right. Now,
the Panchasila. This is principles, is also universal principles. How the water flows from high altitude to the lower altitude is a physical laws, universal principles. Naturally, water, the liquid will flow from higher to the lower. So also, it is the universal mental laws. Whenever, wherever we generate the negativities, defilements, anger, hatred, animosity, we are bound to suffer and will cause others to suffer, cause destruction, damage. These are the universal laws. So, if we are to sustain the world, sustain the nature, sustain the universe, we are talking about nowadays sustainable development. How to sustain? Only if we act, only if we understand the universal laws, universal principles, the universal truth, we can have sustainable development. Otherwise, in the name of sustainable development, we'll be actually doing sustainable destruction, not sustainable development. We will believe we are doing sustainable development, but actually we'll be doing sustainable destruction. That's how this illusion will come. We'll be not in touch with the truth, and truth will appear to us something else. So this Panchasila, it's applicable and very much necessary to all spheres of life, either it's physical or mental or spiritual, whatever we call that, irrespective of religion, caste, creed, nationality, or geographical area. So what are these Panchasila? Pancha means 5. There are principles, hundreds of thousands of physical principles, hundreds of thousands of mental principles that we have to understand. What works, how it works in that way. The Panchasila, the 5, very basic for sustaining a peaceful, harmonious society, whether we call ourselves Buddhists, Christian, Hindus, Muslims, Zoroastrian, Parsi, Jain, whatever we call, immaterial. But these are the basic foundations of the physical and mental, emotional, and moral world. So number 1, first, I want to live. This is my first desire. Each one of you want to live. Nobody wants to get killed and die, right? If I want to live, what I have to do? I have to love myself, I have to love others. As I don't want to get killed, so also I don't have the right to kill others. Whatever is the life form. Different life forms are there. This is the first sila. To sustain life in the universe, in the world, you refrain from killing. Refrain from killing. You don't kill. If you don't kill, what you should do? It says, you save life. Help others to live a better life. First sila. It is not only in Buddhism, it is there in every religion. Love others, love the animals, love the living beings. If you see the core teaching of Islam, Jainism, Christianity, Hinduism, every religion says love your neighbors, love your fellow beings. This is what actually the first sila. The second sila, the second principle important is, I do not want to lose my mobile or whatever things belong to me. Then it's my duty, I should refrain from taking the things which belong to others. Then what will happen? If I do not take the things which are not mine, and you do not take things which are not yours, then there'll be trust in the society. There'll be no stealing, no bribery, or no cheating,
and also no under table, what do you call that? Right, nowadays it's a very important issue in the world, like under table kind of things, corruption, right? So if I'm truthful, if I follow the second sila, that is the second out of this 5 sila, second principle, if I'm truthful, I will take only whatever is genuinely mine, not something which is not mine, knowingly or unknowingly, intentionally or unintentionally. I'll earn my livelihood in an honest way, then the corruption will cease. And there'll be no cheating, no bribing, all these kind of things will not be required. So there'll be trust, there'll be harmony in the society. I think this is there in every religion, and everybody wants it. That nobody wants to lose. So if you don't want to lose yours, you protect the property of others. This is the second principle or second sila. The third sila is everybody wants our sisters, mothers, and our those ladies to be protected. And the third sila speaks about that, third principle, to respect the ladies, the girls, and give them equal right, equal respect as yourself, because they are also part of the whole. Men and women are the part of the whole, two wings of the same vehicle that is moving forward. So here it says, you are not supposed to indulge in illicit, illegal sexual relationship for the male with the woman, and for the woman with the male. So whatever is approved socially or religiously sanctioned, you can have your partner and you can move ahead, but not otherwise. So this will protect the dignity and respect of our second better, we say half, right? Our sisters, mothers, and these ladies. The third sila. The fourth is refraining from telling lies. So we do not want to be cheated. We want to be truthful. People should speak to us whatever is truth. The fourth sila is that where we try to speak the truth, and everybody wants to be truthful. That's why if there is no truth, if everybody speaks only lies, what will happen? There will be breakdown. So telling the truth needs also courage, honesty, and all, because there are still people who speak the truth. The world is still sustaining. If tomorrow everybody tries to cheat and steal and kill and speak lies, what will happen? If the silas are not there, if these basic principles of human society are not there, then the society will collapse. Today we trust each other because we know that you are following the Panchasila. Knowingly or unknowingly, means you will not kill me, you will not steal my property, my belongings, you will not rape or commit rape, or you will not tell lies. So we trust. Harmony is there. This is a basic principles for sustainable society, the Panchasila. Fifth is refraining from alcoholic drinks. And whatever makes your mind dull and intoxicated, and you cannot know what is right, what is wrong, what is true, what is false. So refraining from such kind of intoxicants, not only this beer or wine or things like that, anything that intoxicates and doesn't make you understand the truth, that kind of sura miria or the alcoholic things should be avoided. These are the Panchasila. I think it is there even in Islam, even in other religions also, to avoid from this kind of intoxicants. So see, these are the basic principles
for having a good, beautiful, harmonious society. So at the end, as we don't have much time, I was trying to understand how this can be followed. So I said, Panchasila commitment. We should have commitment to Panchasila. It's not only talking, not only listening, but commit to it to follow. And how? Number one is Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, means I commit to this principle that I will not kill any living being whatsoever. I commit. If it's my commitment, then I will follow that. Right. First is I will refrain from killing. The other aspect of the same principle is I commit and pledge that I shall save forest, nature, and all forms of life. It is not only refraining from killing, but it is saving the forest, the nature, and all forms of life that is there. This is also important. Nowadays, nature is being destroyed and exploited like anything, which is causing imbalance in this world. Then the Panchasila commitment in the first sila is that I will cultivate loving kindness, compassion, and act with compassion. Acting with compassion is the best religion. It doesn't have any color, any creed. So act with compassion. This comes in the first sila, commitment. Second is Adinadhana Viramani Sikkhavadang Samadhiyami. That is refraining from stealing or not taking away whatever it doesn't belong to you. And its commitment is I commit and pledge that I shall donate and share a part of my earning with the needy. It is not that I will refrain from stealing, but whatever I have earned, I'm earning. A part of my earning I'll share with the needy. With the needy means whoever in danger or whoever needs some help. And then I will protect the belongings of others, the things, properties belonging to private, public, government, or even unclaimed and nature-given gifts. So there's so many times it happen in villages, in areas, government does different projects and policies to help the poor people, but we are not responsible enough, committed enough to protect whatever is being developed by the government or even by the people. So this is what we have to have, this commitment, not only not stealing, but protecting whatever things are available in this universe. Either it is, you may say, God-given gift or nature-given gift, or created by the government or by the public body or by anybody. Whatever is available, we have to protect it. This is also sila. Second sila. Third, Kamisu Michachara Viramani Sikkhavadang Samadhiyami. That is to avoid, to refrain from committing illicit, illegal relationship with girls, ladies, or men. That I commit and pledge that I will respect all girls and women like my sisters and mothers and treat them as equals and worthy of their rights. So this is also part of this Panchasila commitment. Then I'll protect them if found in danger anytime and anywhere. This is also commitment in the Panchasila, third Panchasila. Then fourth, Musawada Viramani Sikkhavadang Samadhiyami. Yeah, I'm almost close. Not telling lies. So in the commitment is, I commit and pledge that I will be polite, honest, and speak the truth. I'll develop a positive mental attitude and maintain to be trustworthy and keep my words. It's very important to develop this kind of Panchasila commitment. Then fifth, last, Sura Mereya Majja Pamadathana, to refrain from, to avoid alcoholic drinks, which makes my mind dull and put into a kind of position where I cannot differentiate between right or wrong, good, bad, and commit anything, anytime. So not to have this kind of drinks. Now commitment is, I commit and pledge that I will develop good habits and a positive lifestyle and firmly say no to alcoholic or intoxicants of all kinds.
Then next is in the fifth sila, I will keep the surrounding clean, free from garbage, pollution, and intoxicating substances. These are also Panchasila commitment. So at last, what I would like to say is, the Panchasila is the 5 precepts, 5 rules, 5 principles that will hold the society, the world in a balanced and harmonious way. It is not only for the Buddhist, this is for all human beings. It is being taught by all religious leaders, the faith leaders, the propounders of different faiths. In order to have a balanced, harmonious, peaceful society, these are the basic principles. I would request all present here to highlight and publicize the need of following Panchasila. It's nothing of Buddhist or Christian or Hindu as such. Don't kill, it's good. Love others, right? So like that, each one. Thank you so much. Thank you very much, most venerable Dampiya ji. And I think that he has explained about the Panchshil in a very explicit manner. And if this house allows, may I float a resolution that all of us present, all the religious leaders present in our this program, they endorse what Honorable Most Venerable Dampiya ji has said. May I request, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे आदरणीय धम्पिया जी ने बात कही कि पंचशील का सिद्धांत कि हम हिंसा से विरत रहेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम दूसरों की प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगे, हम महिलाओं की रक्षा करेंगे, हम नशा नहीं करेंगे, हम वातावरण को सुरक्षित करेंगे, उसके साथ भी हमको शांति स्थापित करनी है। इन प्रिंसिपल्स को, इन आधारभूत बातों को हमारे सारे धर्मों के जो गुरु हैं और सारे धर्म इसको एक्सेप्ट करते हैं। क्या मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं, क्या ये सही है? अगर सही है तो मैं इसको क्या इस हाउस के द्वारा ये रेजोल्यूशन हम पास कर सकते हैं? So with the smiling acceptance and consent of all the religious leaders, we pass this resolution in this house that the Panchshil principles, they do not belong to any particular religion, but they belong to the whole society as a whole. All the religions, they respect it, they accept it. Thank you very much. मैं चूंकि हम ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, मैं ज्यादा भूमिका में ज्यादा समय नहीं बिताना चाहता। मैं चाहता हूं कि अब हम डॉक्टर मुक्ति के लिए जो हम प्रेयर्स करेंगे, उसके पहले डॉक्टर मुक्ति के बहुत निकट उनकी जो सेवा भी उन्होंने आखिर के दिनों में बहुत ज्यादा की, उनके पुत्र डॉक्टर कृष्ण मूर्ति, उनसे मैं कहूंगा कि उनके बारे में बहुत शॉर्ट में जितना भी कंसाइज करके कह सकते हैं, जितने कम समय में कह सकते हैं, वो अपने भाव प्रदर्शित करें। और उसके बाद फिर हम अपने समस्त धर्म गुरुओं से ये निवेदन करेंगे कि उनके लिए प्रार्थना करें। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि हम सबको ध्यान रखना है कि हम समय का ध्यान रखें। तो डॉक्टर कृष्ण मूर्ति, डॉक्टर मुक्ति के सुपुत्र। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिए कि तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ा हूँ मैडम, मैं सर झुकाए खड़ा हूँ मम्मा कि जैसे मंदिर में लौ दिए कि। Dr. Mukti was my mother, and I know a lot of people here can say the same thing, that she was their mother. This is the person that we are talking about. I don't need a paper to say anything, but because it may turn out to be a slightly emotional thing for me, so I am using this. I will not tell what she has done, what college she has started, at what year she created, how she helped the poor, because you can find this everywhere. This is one or the other fellow will tell you.
What I am going to tell you is my perspective of my experiences with her. And I believe a lot of you will think that these are the common things that have been happening. In my childhood, we were always being scolded, but it was never for studies. Never ever were we scolded for studies, for studying. We were scolded for moral values. We were scolded for achieving something different, for other aspects of life, for music, for learning instrumental music, for learning sports, extracurricular activities, gardening, anything like this. For this, we were scolded. At the same time, the love of my mother was always and always palpable. This all of you will find in common whenever she used to scold also. Then also it was always palpable that how much she loved us. Whenever we were sick, she did not need to meet us to know, no, something is wrong. She always knew it. This taught us whatever is right is right. A mother will not like to scold the children, but that was the right thing to do. Even if it is tough, you will not refrain from doing the right thing. पहले आंसू आते थे तो तुम आ जाती थी, आज मां की याद आती है तो आंसू आ जाते हैं. She was like the sun. She was present for everyone, just like the sun is present for everyone. She had a wonderful memory. She remembered everyone. She even remembered what that fellow said, what that fellow was wearing, what are the family members doing, in which college are they studying. Possibly हमारे ERP में भी इतना डेटा नहीं है एम्प्लॉइज का जितना उनके पास डेटा था. आज की तारीख में हमें ERP की जरूरत ही इस वजह से है. Just like the sun, she was an encouragement for everyone. उनको देख के मन करता था काम करने का. She bled excellence. Wherever she went, she demanded and she got the best out of everyone which was there. In very boring, dull get-togethers, जो कि होते रहते हैं हमारे, she was the sparkle, she was the spark, जो उस महफिल को बहुत अच्छा कर देता था. She was just like the sun. She was there in every field. You talk about the field and she was there. She knew about it. Art in every form. Drawing, paintings, you can see the art gallery to appreciate it. Singing, I've grown up to her singing. I remember her sing songs in and out. There were so many of them. Instrumental music. A lot of you must have heard that she played wonderful dholak. But she was a very good Hawaiian guitar player. She was a very good dancer. Dancers can dance, but she was one of those dancers जो सबको नचा लेती थी. किसी को भी. I have a wonderful video I will share where she is made Dr. Hirohito dance. She was excellent in literature. Talking to her was sometimes very difficult because of her explicit knowledge, not just in Indian literature, in English literature. Wonderful. She was a very good शायर. इनके पास बहुत इन्होंने शायरी लिख रखी थी. Now a mother sets the standards in a family. Mother जितनी अच्छी होती है वो परिवार उतना ही अच्छा होता है. And she was a very high quality setter. I got this opportunity. My mother is my teacher, but I have had this quality of becoming a doctor under her. She became my formal teacher in 2006. And with her, it was never about academics. It was always about learning the basics of the subject, not mugging them up, understanding them. And the second thing as a doctor that she wanted us to do is to understand the patient. मैं आपको एक incident बताता हूँ. There is for learning of the clinical aspect, there is a method of case presentation. A case we take and present to the teacher. Now, one of my batchmates was supposed to take the case. He took the thermometer out of the Savlon disinfectant and he took the oral temperature. Then other things also, and we came back to present the case to her. When we came, she asked the staff nurse, please bring Savlon and put 1 or 2 drops of Savlon in all the students' mouth.
And you will again, कि क्या हुआ? She was my mother. I could not say also anything, and no one could say anything. After the Savlon was put, she said, now you'll remember to wash the thermometer before putting it in a patient's mouth. So this was how serious she was regarding patient's comfort. She could never be silent. She was always doing something, even when she was not very well. At that time, she did palmistry, astrology, certified courses, long certified courses, difficult courses, but she did them. Film appreciation courses from Pune Institute, National Film Institute, geriatric medicine, and she never settled for second best. I'll be ending my speech here, but we know Dr. Atul is not complete without Dr. Mukti. Similarly, Dr. Mukti is not complete without Dr. Atul. Why I want to say this? We lost her in COVID. It is one of the dreaded complications of disseminated intravascular coagulation. One of the worst complications, and that is what took her, and that is why we are here. But ये जो दुख और पीड़ा है, दुख और पीड़ा जो है, उससे डिप्रेशन होना, नकारात्मकता आना, ये सामान्य है. This is common. But हम सबको एक चीज पता है, डॉक्टर अतुल इज नॉट कॉमन. इस दुख को, इसको शक्ति बना के एक सकारात्मकता लाना, एंड ऑर्गेनाइजिंग सच ए वंडरफुल प्रोग्राम जिसमें 1 week dedicated to remember her. This is what only he can do. I would thank Dr. Atul for doing such a thing. It is not simple. जब घर में कोई ऐसा होता है तो दुख ही दुख होता है, उसमें ऐसा कुछ कर पाना इज डिफिकल्ट. क्या है ये हफ्ता, क्या है डॉक्टर मुक्ति के लिए, क्या है भाई? ये हफ्ता ये है कि जो वो करती थी, जो दुख में भी हिम्मत नहीं हारना, अपने जीवन को एक अलग स्तर पे ले जाना, नई नई चीजें सीखना, हमेशा प्रेरित रहना, उसको याद कर रहे हैं, उस शक्ति को याद कर रहे हैं. शक्ति या वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब आवाज. इसी को अपनी बात को खत्म करते हुए उन्हीं के, प्लीज ट्राई एंड रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग. इट इज अ फेमस सॉन्ग, द सिचुएशनल पार्ट ऑफ इट आई एम सेइंग. ट्राई एंड रिलेट. दिन ढले जहां रात पास हो, जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो, याद आए गर दिल उदास हो, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे. थैंक यू.